We do not let emotions take over us when we are speaking or acting at important forums, because these are actions that you cannot undo. You know, everybody will remember what you did. And sirf hum nahi the, even Ukraine, imagine a country which is completely depending on the US today, also abstained from voting against China. तो आई डोंट थिंक हमने किसी तरह से भी किसी को भी ये इंडिकेशन दिया है दैट वी आर गोइंग टू बी अ थिएटर ऑफ वॉर फॉर एनीबडी ऑफ ऑल द कंट्रीज इन दिस रीजन. We've been one country. I'm not talking of China, of course, because China and US उनका अपना एक आज की डेट में अपनी उनकी ग्रेस चल रही है. But of all the countries in this region, we are somebody who's never let a foreign fighter plane land on our land and strike another country. Or we've never been a base for anyone, and I think we intend to be that way only. हम अपना दिफा करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत लगेगी, but at the same time we are not up to get used by anybody. And I think you of all the people should know that जब भी हमें रशिया के ऊपर सवाल किए गए हैं, we've been able to justify our position कि हम किसी दूसरे के वॉर में अपनी नाक नहीं घुसाना चाहते. Just because Europeans feel that way, or Western powers who have had a colonial past, they think that this region is somehow answerable to them, कि उनके जो conflicts हैं उसमें हम जो हैं एक पार्टी बन जाएं just because it is their interest. That's not going to happen. हम दूसरों की वॉर में यूज होने के लिए नहीं बैठे हैं. We are here to make our own story. We are here to create our own history, and not at somebody else's expense and not at our people's expense. हमें बिल्कुल भी हम इस रास्ते पे कभी भी नहीं जाएंगे जिससे हमारी जो आवाम है उसका नुकसान हो, या कोई आए और कारपेट बॉम्बिंग करके चला जाए. We've got nothing to do with others' circus. In fact, हमारे चाइना के साथ इतनी प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद we are trading with them, and it is going to stay that way only. And with dialogue, we've been able to de-escalate the situation at the LAC. That's how you do it. जहाँ आपको बोलना है आप बोलें, पर जहाँ आपको नहीं बोलना है, you should have the courage to abstain yourself and just chill. And that's what we've been doing. So, मैडम आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि क्वेश्चन भी साथ में मैं डाल रहा हूँ. आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन जस्टिफाई कर रहा है. What do you think? How much India is independent in its relations with Russia? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन के सामने बैठ के ये बात करनी पड़े कि भाई ये वॉर जो है ना इस वक्त अच्छी नहीं होती, इन दीज टाइम्स वॉर्स आर नॉट गुड, तो आप बेसिकली वो वेस्ट को कर रहे हैं, सिग्नलिंग कर रहे हैं कि भाई हमने उसको कह दिया. एंड वो थोड़ा एससीओ में गई और उसके बाद राइट आफ्टर दैट यूएन में तमाम वेस्टर्न लीडर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच को कोट किया कि देखें उसका. अभी इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस लेके यूक्रेन मजीद पहुंच गया. ठीक है, आप क्या समझते हैं कितना को प्रेशर है और कितनी को आज़ादी है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है और आपको सिग्नलिंग करनी पड़ रही है टू द वेस्ट? Well, you can call it signaling. That's not how we look at it. Prime Minister is the highest diplomat of any country. Now, Mr. Modi cannot behave like Imran Khan, जो अपने खुद के मफाद के लिए किसी दूसरी कंट्री के साथ हॉर्न्स लॉक कर ले without thinking कि इसके हमारे अवाम के लिए क्या implication होगी. United States is very, very important for us. Russia is equally important for us. And like I said, they have historically been on our side when United States was not. So it need not be seen as signaling like how you would like to see it. It can also be, a fresh perspective to a friend that, look, you are going wrong here. And you cannot be defended on this. You have to stop this unnecessary aggression. देखिए, Russia is like, of all the countries, उनके पास सबसे ज़्यादा nuclear weapons हैं. अभी तक they have refrained from, going nuclear. And we hope it stays that way. But you can also see in Europe and in US, अब already इसके बारे में बातें होना शुरू हो गई हैं कि what next? अब क्या जो पुतिन है वो कोई न्यूक्लियर वेपन चला देंगे? Can this go nuclear? Biden is also speaking about, how it can unsettle the whole world order and it can lead to third world war. I mean, जब Soviets ने
क्यूबा में अपनी मिसाइल्स बिठाई थी इन रिटेलिएशन टू व्हाट द यूएस डिड इन टर्की एंड इटली to basically keep an eye over the Soviet Union. It unsettled the USA in such a frenzied manner. उनको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्योंकि हमारे बगल में मिसाइल्स आ गई हैं. Unfortunately, West का ये problem रहा है कि they have very different yardsticks for themselves and for others. And we are here to change that equation. We are here to tell them that, look, there are powers or countries or whatever you want to call them in Asia also who can stand up to you for their own vested interest. We are not indifferent to what is happening in Ukraine, but at the same time, we are not here to toe someone else's line. अगर आज यूक्रेन चाहे तो वो de-escalate कर सकते हैं. And like I said, CIA को तो कब से पता था? They were publishing reports after reports कि Russian army and their military presence is building up around Ukraine. Why did they not stop it in the first place? They are also using Ukraine in their own big game. So we cannot be, someone like Ukraine or someone like I don't know what. I mean, we cannot be a part of that. Or आप जिसको signaling समझ रहे हैं, it's just us, doing ourselves and telling the world this is what suits us. अगर हम रशिया से fuel ले रहे थे, तो क्या जर्मनी until recently रशिया से natural gas नहीं ले रहा था? It's only very recently that they have started to look towards Qatar and UAE for their natural gas consumption. In fact, abhi jaake Germany is leading that, whole entire Russia front in Europe. बहुत ही recently तक तो they were like kind of indirectly defending the Russian actions, if not like anything else. और इस चीज़ को लेके within the NATO nations बहुत debate हो रही थी कि how is that Turkey and Germany वो NATO का हिस्सा हो के भी they are not very harsh on Russia when it comes to giving statements and otherwise. तो हर कोई अपना मफाद देख रहा है, तो हम क्यों नहीं देखें? हम तो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे ना टू रन आवर कंट्री कि हम किसी दूसरे की ज़बरदस्ती लाइन टो करें. ठीक है, हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं एंड वी आर एबल टू डील विद देम. पीपल हैव बीन, अदर कंट्रीज हैव आल्सो हेल्प्ड अस, but that was not like we going to them with a bowl and saying please help us, otherwise क्या हो जाएगा, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को कोई कंट्रोल कर लेगा और फिर पता नहीं दुनिया में क्या हो जाएगा. We did not create a frenzy. Whatever came to us came out of mutual respect and love, and we have also likewise helped other nations, gave them vaccines and whatever we could do in our own humble capacity. So I would say please थोड़ा सा अपने आप को इस dehyphenate the Pakistan equation from this whole scenario. It's very important that you look at this whole thing very objectively and actually appreciate the Indian foreign policy in a rational manner. See how India has played out this whole thing. If you think like a Pakistani, I'm sure, of course, you would not be able to appreciate it. But if you think as a rational person, as a global citizen, you will be able to see that India has done exceptionally good. India has done exceptionally good. वो obviously and India's power has been recognized. इसमें तो कोई शक नहीं है. Press the bell icon on the YouTube app and never miss. उन्होंने इस्तेमाल किया, हम तो बड़े सस्ते में इस्तेमाल हो गए, मैं तो ये कहता हूँ. Either it was bringing Taliban into the power, making madrasas, fighting war against terror. बहुत ज़्यादा हमने नुकसान करवा लिया. At the end of the day बातें भी करवा ली. They made us the scapegoat. I accept it. लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो वेस्ट एंड चाइना का ये जो क्या हम कहेंगे गुत्थम गुत्था होनी है, that the theater of the war will be India. और somehow अगर इंडिया को इतना ज़्यादा मिलिट्री पावर दे रहे हैं 2008 से लेके 2016-17 तक, 18-19 अभी तक कर लें, तो मोर देन जो है ना वो 18-20 अरब डॉलर का इंडिया वेपन ले चुका है अमेरिका से. तो और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो आ चुकी है. तो आप नहीं समझते कि इंडिया इज़ द नेक्स्ट थिएटर ऑफ द वॉर विद ऑल दैट वेपनरी, या क्या आप समझते हैं कि द थिएटर ऑफ वॉर विल बी समवेयर एल्स? लेकिन इंडिया के अंदर बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि द इंडिया इज़ बीइंग यूज्ड. आप कैसे देखते? पहले तो आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, हमें कोई कुछ दे नहीं रहा है, हम खरीद रहे हैं. ठीक है, हमें कोई obviously that is what I mentioned, the money as well. Yeah, and it is about defending yourself and not being an aggressor.
India doesn't have any history of being an aggressor कि दूसरे मुल्कों पे war खोल दी and because nobody comes out looking good out of that situation. We have full understanding of that war is the last option that we want to choose, be it with Pakistan, be it with China, unless it is thrust upon us, then we are more than happy to fight it. But I don't know where that understanding of yours is coming from, because there are also sections in India which do not support the current dispensation. तो उनको कुछ लोग हैं ऑफ कोर्स जिनका ये व्यू हो सकता है कि मतलब ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी अग्रेसिव है और इनकी जो जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं दे कैन somehow lead to confrontations. But I think we are making very very calculated moves. In fact recently इंडिया में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मजम्मत भी हुई फॉरेन ऑफिस की कि जब आपको पता है वोट करने की बारी आई UNGA में अबाउट